Hi. So in this video, we are going to cover some of the basic concepts of finance, right? If you are planning to opt finance as a specialization in during your MBA, you need to have some basic knowledge regarding what I am teaching in this video, right? So without further ado, let's get started. So we are going to learn finance. Okay, so let's cover this particular subject through with the help of few questions. So, what do you mean by accounting concepts? List them. So, accounting concept is an important concept in finance. Okay, so the concept of accounting the entire realm of accounting is guided by a few important concepts. Now let's cover them with the help of internet. Accounting concepts are ideas, assumptions, and conditions based on which a business entity records its financial transactions and organizes its bookkeeping. It helps a business interpret and integrate a financial transaction into the accounting process. It is important for a business owner. It is important for a business owners and accountants to understand basic concepts to bring about consistency and uniformity in their accounting process. In this article, we examine accounting concepts and okay. So, as I read out, accounting concepts are ideas, assumptions, and conditions based on which a business, मतलब basically अकाउंटिंग concepts कुछ सेट ऑफ आइडियाज assumptions और कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंग बिजनेस कोई बिजनेस एंटिटी अपने जो डे टू डे या फिर फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है वो उन पार्टिकुलर रूल्स के को ध्यान में रखते हुए बनाती है ना। और अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन बनाता है मतलब किसके द्वारा फ्रेम किया गया है। There is a entity called GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Okay, so what are accounting concepts? Okay, we studied it. What are functions of accounting? Concept and convention. Okay, so here we start. Business entity concept. Now, business entity concept states that business is an individual entity that is separate from its owners. Okay. The business entity, economic entity, or separate entity concept assumes that a business is independent of its owner. A business may not record its owner's personal expenses, income, liabilities, and assets. It aids in tracking business's expenses, incomes, and tax deductions without any ambiguity. In addition, it safeguards a business owner's personal finances and helps build their credit worthiness. It reflects cash flow and a financial position more accurately. This clear distinction helps stakeholders and creditors take appropriate business decisions based on company's performance rather than owner's financial position. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है कि हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस का जो ओनर है दैट दे आर डिफरेंट. ओके, नाउ व्हाई इज दिस कंसेप्ट important? Because by business entity concept, we can ensure that business is separate from its owner and hence their finances are also different. So investors can be rest assured that हम that उनको सिर्फ बिजनेस की बैलेंस शीट देखनी है, बिजनेस के अकाउंट्स देखने हैं rather than the owners financial condition, right? Going concern concept. Now, going concern concept क्या कहता है कि a business will go for on and on and on and on, even after the owner's death. Okay. Going concern concept prescribes that accountants prepare financial statements on the assumption that a business may continue its operation for the foreseeable future. Under this concept, the definition of foreseeable future is a period of 12 months from the end date of the reporting period. If a business owner or the management is invested in scaling down business operations to zero, they cannot apply the going concern concept for accounting. Accountants may no longer apply the going concern concept if a company unable to pay dividends, unable to raise credit from banks and financial services,
facing losses or negative operating cash flow, facing an adverse financial position, unable to pay back crucial debt, and facing an unfavorable legal or regulatory action against it. तो basically going concern concept का मतलब ये है कि business चलती रहेगी, okay, irrespective of whether the owners are dead or alive. टू बी स्पेसिफिक, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का एप्लीकेशन ये है कि किसी भी अकाउंट को बनाते समय फॉर द इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट, कीपिंग इन माइंड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर, राइट। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अप्लाई तब नहीं होता जब कुछ कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करने में असमर्थ रहती है, फिर बैंक वगैरह या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज से क्रेडिट क्रेडिट नहीं मिलती किसी बिजनेस को, या फिर नेगेटिव में कैश फ्लो जा रहा है। Okay, so these are the facing an adverse financial position, unable to pay crucial debts. So these are the conditions when going concern concept is not applied. उसके बाद थर्ड में आते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या है? दिस इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन assumption, and it stipulates that companies record only those transactions that they can quantify and measure in terms of money. ओके, सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का बेसिकली ये है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनीज सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जिनको वो क्वांटिफाई कर सकती है और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकती है। इफ दे कैन नॉट असाइन अ मॉनेटरी वैल्यू टू अ ट्रांजैक्शन, they do not record it in their annual financial statement. Though these transactions affect a company's financial performance, they may not find a place in financial statements, as monetizing them can be challenging. Some examples of non-monetary values include employee competence, product quality, employee efficiency, market sentiment, business productivity, and stakeholder satisfaction. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं एसेट्स को या फिर लायबिलिटीज को अकाउंट करती है अपने अकाउंट्स में जो मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई हो सकता है। इस वजह से काफी एसेट्स और लायबिलिटीज छूट जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी, एम्प्लॉय एफिशिएंसी, मार्केट सेंटिमेंट, बिजनेस प्रोडक्टिविटी एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए छूट जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। The accounting period concept prescribes a time frame within which a business records and reports its financial performance for the purview of internal and external stakeholders. An accounting period of a company may coincide with the fiscal year. A company can determine time frame for internal reporting like 3 or 6 months, or prepare monthly financial reports to analyze their cash flow positions. The management can determine a convenient accounting period for internal reporting, but the reporting for investor, government, and tax purposes is typically for the period of 1 year. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस जिस वक्त के लिए, जिस पीरियड ऑफ द ईयर के लिए अपना जो है अकाउंट्स बनाती है, और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल या फिर फाइनेंशियल ईयर, राइट। But on the other hand, we generally know an year from 1st January to 31st December. Now, uh, this is because of accounting period concept, right? Now, accrual concept. Accrual is a fundamental concept that guides how a business can record cash or credit transactions. Under this concept, a business records a financial transaction in the period it occurs. It does not consider whether the business pays or receives cash at the time of the transaction, or if it pays cash after a certain period. For example, a company records a credit purchase at the time of purchase rather than when it pays back the seller. This helps record and report income, expenses, liabilities, and receivables accurately. So accrual concept क्या होता है कि ये concept डेब्ट्स और liabilities को के साथ डील करती है। डेब्ट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स के साथ डेब्ट करती है। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स में कोई डेब्ट या कोई जो है उधारी में उधारी वाला ट्रांजैक्शन हम तभी रिकॉर्ड कर देते हैं
जब हम उस ट्रांजैक्शन को अंडरगो करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं कल बाजार गया और मैंने मछली खरीदा। ओके, सो if I were to purchase it for a business, then according to accrual concept, I will go home right away and enter the transaction in in my accounts, irrespective of कि मैंने कब वापस किया वो पैसा दुकानदार को। ओके, सो दिस इज बेसिकली accrual concept। उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट में। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहती है? अंडर द रेवेन्यू रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, a seller records potential revenue from a transaction regardless of whether they have or have not received proceeds. The ownership of a product transfers from a buyer to seller during a sale. A seller recognizes the transaction by creating a receivable against the buyer's name in their ledger. An accountant creates another entry when they receive the due amount in the future. सो रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहती है कि सेलर जो है, कोई सामान बेचता है, बेचने के बाद ही वो अपने अकाउंट्स पे वो लिख लेता है, राइट। लेकिन जो वो मतलब रेवेन्यू जो रियलाइज होता है, उसको जब रियलाइज रेवेन्यू जब रियलाइज होता है उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए जब पैसे मिलते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट सेल्स, राइट। उस पार्टिकुलर कमोडिटी के लिए जब पैसे मिलते हैं, देन दोबारा से वो अकाउंटेंट को एंट्री बनाना पड़ता है। क्यों? फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। और मतलब दो दो जगह पे एंट्री होती है। Full disclosure concept. The full disclosure concept requires a business entity to furnish necessary information for the benefit of those who read financial statements and reports for investment, taxation, or audit purposes. This concept aims to provide important financial information to investors, creditors, shareholders, clients, and other stakeholders. Disclosure policies cover revenue recognition, depreciation, inventory, taxes, earnings, stock value, leases, and liabilities. तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहती है कि एक बिजनेस एंटिटी को अपने जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस है वो टाइम टू टाइम पब्लिक करना पड़ेगा। ओके, एक्यूरेटली, सो दैट जो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स है हमारे बिजनेस का, वो उनका वो मतलब इन्फॉर्म्ड रह सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, है ना। उसके बाद डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। Dual aspect concept states that every transaction affects two accounts of a business. जैसे कि मैंने बताया कुछ देर पहले, a business then records both aspects to enable accurate accounting. Every financial transaction has a credit or debit giver or receiver effect. If an accounting process does not represent both, but it may lead to faults in the final accounting record. The dual aspect concept is the foundation of the double entry system of bookkeeping, which is now a standard method for auditing and taxation. कहता है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है दैट इज वो कहता है कि एक कोई भी ट्रांजैक्शन दो दो जगह पे एंट्री एंट्री होती है, एक डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द golden rule of accounting, right, which I am going to teach you in a after some time. उसके बाद हम आते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि द मटेरियल कंसेप्ट प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई इफ अ पीस ऑफ financial information is material and whether it can influence the person reading a company's financial statements. Based on this concept, an accountant or business may remove negligible transactions that may not have a bearing on final accounts. This concept is open to subjective interpretation, and the basis for using the materiality concept varies with the size of a company. While a larger company may round off figures in the final accounts to crores, a small firm may round off their figures to lakhs. तो मटेरियलिटी कंसेप्ट का ये है कि आप छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन है उनको राउंड ऑफ करके आप राउंड फिगर में ला सकते हो, राइट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस कंसेप्ट। Under this concept, a business can record only those transactions that they can furnish a documentary proof for. Without proper and valid documentary evidence, a transaction can be biased or undependable, and it can increase the scope of financial irregularities. For example, a retail employee may present a bill for purchase and sales and corroborate with sale and purchase invoices. Verifiable objective evidence concept ये होता है कि आप अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को
इंटर कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, जिनके लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, राइट? यू हैव एविडेंस रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट. Historical cost concept. The historical cost concept states that a business may record assets and liabilities at their historical cost rather than current market or sale value. It helps to maintain consistent, reliable, and verifiable financial information, including the current value of an entity can result in financial irregularities. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहती है कि आप जो कॉस्ट या फिर प्राइसेस को लेते हो वो आप हिस्टोरिकल जब जब ट्रांजैक्शन हुआ था तभी का आप ट्रांजैक्शन मतलब वैल्यू ले सकते हो. ओके. ये किस तरह से मदद करती है? ये दिस हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट रिलायबल एंड वेरीफाइबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके. So this is called historical cost concept. So that's it. Now just we have studied what do we mean by accounting concepts. List them. Okay. तो हमने पढ़ा कि accounting concept क्या होता है. So we just studied about accounting concepts. Now we will study about corporate finance. What does it include? How will you explain what is corporate finance to a 10-year-old? So, corporate finance deals with the capital structure of a corporation, including its funding and the actions management take to increase the value of the company. Corporate finance also includes the tools and analysis utilized to prioritize and distribute financial resources. तो corporate finance क्या कहती है कि it deals with capital structure of a corporation. कॉरपोरेशन कोई कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है अ, उसको उसके साथ डील करती है कॉरपोरेट फाइनेंस. ओके. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या से क्या मतलब है? कैपिटल मतलब होता है बेसिकली कैपिटल का मतलब होता है कि पैसा. ओके. नाउ वेयर फ्रॉम वेयर डज दे arrange that money for operating business is something that corporate finance deals with. It could be debt, it could be equity, it could be any other means, right? Including its final funding and action management take to increase the value of the company. क्या क्या एक्शंस का मैनेजमेंट ले रही है कंपनी का वैल्यू बढ़ाने के लिए? ये दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद. Corporate finance also includes the tools and analysis utilized to prioritize and distribute financial services. कॉर्पोरेट फाइनेंस के पास कुछ टूल्स है जिससे वो फर्दर फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो कंपनी का है वो प्रायोरिटाइज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. The ultimate purpose of corporate finance is to maximize the value of a business through planning and implementing management resources while balancing risk and profitability. The ultimate purpose of corporate finance is to maximize the value of a business through planning and implementing management resources while balancing risk and profitability. पर्पस क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस का? फॉर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस का वैल्यू मैक्सिमाइज करो. हम्म, कैसे? थ्रू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट रिसोर्सेज व्हाइल बैलेंसिंग रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी. राइट. जितना हो सके रिस्क को अवॉइड करो और जितना हो सके प्रॉफिट बढ़ाओ. यही कॉर्पोरेट अकाउंट्स का काम है. द थ्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट गवर्न कॉर्पोरेट फाइनेंस. कौन से थ्री एक्टिविटीज है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस गवर्न करती है? इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल बजटिंग. Okay, investments or capital budgeting. That means investment and capital budgeting include planning where to place the company's long-term capital assets in order to generate the highest risk-adjusted returns. They mainly This mainly consists of deciding whether or not to pursue an investment opportunity through extensive financial analysis. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग का ये मतलब ये है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस ये डिसाइड करती है कंपनी के लिए कि वो कंपनी अपने जो एसेट्स है और जो रिसोर्सेस है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी टू गेन द मैक्सिमम रिटर्न्स, राइट? उसके बाद कैपिटल फाइनेंसिंग. दिस कोर एक्टिविटी इंक्लूड्स डिसीजन हाउ ऑप्टिमली फाइनेंस द कैपिटल इन्वेस्ट्स थ्रू द बिजनेस इक्विटी डेब्ट और मिक्स ऑफ बोथ.
This core activity includes decisions on how to optimally finance the capital investments discussed above through businesses, equity, debt, or a mix of both. Long-term funding for major expenditures or investment may be obtained from selling company stocks or issuing debt security in the market through investment banks. कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल को जैसा मैंने बताया कि कैपिटल मतलब होता है कंपनी का पैसा। तो कंपनी का पैसा कहाँ से लाना है? डेब्ट से लाना है, इक्विटी से लाना है, दोनों के मिक्सचर से लाना है। ये दिस इज समथिंग दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद। उसके बाद डिविडेंड्स एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। डिविडेंड और रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब जो हमने जिस सोर्स से पैसा उठाया है, लेट्स से हमने डेब्ट से पैसा उठाया है। सो डेब्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी पार्टिकुलर पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर कॉरपोरेशन से उधार मांग रहे हो, राइट? डायरेक्ट पैसा उधार मांग रहे हो। तो उस वो जो उधार मांग रहे हो उसको इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करना पड़ता है। ओके। ऑल्सो इफ यू आर opting for equity, then now equity involves uh, issuing of shares, right? So आप अगर शेयर इशू कर रहे हो तो उनके खिलाफ कुछ डिविडेंड देना पड़ता है। तो डिविडेंड और रिटर्न ऑन कैपिटल, डेब्ट रिटर्न करने का जो काम है, कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं उसको, दैट इज समथिंग दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज अ बैलेंस शीट, व्हाट इट इंक्लूड्स। A balance sheet is a statement of the financial position of a business which states the asset, liabilities, and owner's equity at a particular point in time. In other words, the balance sheet illustrates your business's net worth. Okay, मतलब एक सीधा शब्दों में बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट अ, आपका जो कंपनी का नेट वर्थ है वो दिखाता है। तो बैलेंस शीट का एक इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। This is total assets equals to total liability plus equity. This is an accounting equation and this is what is reflected in the balance sheet, right? क्योंकि बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं और दोनों साइड मैच करते हैं एक दूसरे से। एंड इफ इट इज नॉट मैचिंग देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द accounts, right? The balance sheet may also have details from previous years, so you can do a back-to-back comparison of two consecutive years. This data will help you to track your performance and will identify ways in which you can build up your finances and see where you need to improve. तो बैलेंस शीट का में बेसिकली एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द अकाउंट्स दैट इज प्रिपेयर थ्रू आउट द ईयर रहती है। ओके। और उसके मदद से हम लोग एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकती है, एक इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले सकता है। All right. The accounting balance sheet is one of the major financial statements used by accountants and business owners. The other major financial statements are income statement, cash flow statement, and statement of stockholders' equity. The balance sheet also referred to as the statement of financial position. Okay. एक बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये रहा एक बैलेंस शीट, एक सैंपल बैलेंस शीट, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के बाद वाला फॉर्मेट है, इससे पहले एक अलग फॉर्मेट था, है ना। सो आप देख सकते हैं एप्पल का जो बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करंट एसेट जो है, करंट एसेट इज अ हेडिंग,
कैश करंट एसेट के अंडर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए, September 26 2020, September 28 2019, 2 years का कंपैरिजन है ये। मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिस एंड दिस, अकाउंट्स रिसीवेबल, नेट इन्वेंटरीज दिस एंड दिस, इन्वेंटरीज दिस एंड दिस, वेंडर दिस एंड दिस, अदर करंट टोटल। इन सभी करंट एसेट के अंडर में ये सारे आइटम्स आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, नेट इन्वेंटरीज, वेंडर्स, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट। देखिए, इन सब का समेशन जो होता है दैट इज टोटल करंट एसेट, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेजर हेडिंग होता है दैट इज नॉन करंट एसेट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर नॉन करंट एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट। जो नहीं, इन तीनों का जो समेशन है वो होता है टोटल नॉन करंट एसेट। और इसके साथ जो है टोटल करंट एसेट और टोटल नॉन करंट एसेट ऐड करके हम लोग जो आते हैं दैट इज टोटल एसेट में। ये होता है हमारा एसेट साइड। उसके बाद लाइबिलिटीज को अगर हम लोग देखें तो अ, देखिए, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर सिक्योरिटी में अकाउंट्स पेएबल में अमाउंट, अदर करंट लाइबिलिटीज, डिफर्ड रेवेन्यू, कमर्शियल पेपर, टर्म डेब्ट, इन सभी का अमाउंट मिला के टोटल करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है टर्म डेब्ट, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इन दोनों का प्लस करके होता है टोटल लाइबिलिटीज। उसके बाद लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अलावा और क्या क्या आइटम आता है देखते हैं। शेयर होल्डर सिक्योरिटी, शेयर होल्डर सिक्योरिटी, कॉमन स्टॉक एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल, retained earning, accumulated other comprehensive income. Okay, so total shareholders equity, ये सभी मिला के total liabilities and shareholders equity that is 323888. Okay, इन सभी का मिला के, so you see there here is 323888, here is also 323888. Okay, this is why I said a balance sheet must match in order to prove its effectiveness. उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा सीधा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, the time value of money or TVM is the idea that money that is available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. वो तो यार देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बस ये कंसेप्ट है कि आप सपोज एक पैसा रिसीव करने वाले हो, तो जितना जल्दी हो सके आप लोगे उतना आपका जो है उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो पैसा आप फर्दर इंटरेस्ट में लगा सकते हो, उस पैसे के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप बैंक में रखोगे तो, है ना। तो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जित पैसा रिसीवेबल कोई पैसा जो है वो जितना जल्दी हो सके मिल सके उतना बेहतर है। देर आर 5 वेरिएबल्स दैट यू नीड टू नो। देख लेते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स है। प्रेजेंट वैल्यू, what is present value? This is your current starting amount. It is the amount you have in your hand at present time, your initial investment for the future. Future value, this is your ending amount at a point in the future. It should be worth more than the present value provided it is earning interest and growing over time. The number of periods, this is the timeline for your investment or debts. It is usually measured in years, but it could be any scale of time such as quarterly, monthly, or even daily. Interest rate, this is growth rate of your money over payment amount. These are a series of equal evenly spaced cash flows. आपने SICI पढ़ा होगा कि प्रिपरेशन के वक्त, तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, इसको मैं लेट्स से 10% पर एनम पे लगाता हूँ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ओके, और ये मुझे 121 रुपीज ला के देती है। तो 100 रुपीज जो मैं लगाता हूँ दैट इज माई प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू इज 121, इंटरेस्ट रेट इज 10, and PMT, payment amount is this 121. Sorry, not payment amount is 11,
for the first year and 11 for the second year, sorry, 10 for the first year and 11 for the second year, है ना? उसके बाद what is NPV IRR? What is NPV IRR? What is opportunity cost? Net present value is defined as an investment measure that tells net present value. NPV IRR. So NPV क्या है? NPV means net present value, है ना? Net present value is defined as an investment measure that tells an investor whether the investment is achieving a target yield at a given initial investment. NPV also quantifies the adjustment to the initial investment needed to achieve the target and yield, assuming everything else remains the same. Formally, the net present value is simply the summation of cash flows for each period, N in the holding period, capital N, discounted at investors' required rate of return. Net present value is defined as an investment measure that tells an investor whether the investment is achieving a target yield at the given initial investment. NPV also quantifies the adjustment to the initial investment mm, needed to achieve the target yield, assuming everything else remains the same. Formally, the net present value is simply the summation of cash flows for each period holding discounted at the investor's required rate of return. तो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि कोई इन्वेस्टर जब किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये देखने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो एक पॉइंट पे जाके रिटर्न देगा या नहीं देगा जितना उसको चाहिए। ओके, बेसिकली एनपीवी एक मेथड है अपने इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर वैल्यू को एसेस करने का, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, पहले ईयर में वो 11 रुपए देता है, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में वो 10 रुपए इंटरेस्ट देता है, सेकेंड ईयर में 11 रुपए देता है, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एंड में मुझे 121 रुपीज मिलता है मेरे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। सो 121 इज बेसिकली माई नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 2 years. The net present value is simply the present value of all future cash flows discounted back to the present time and at the appropriate discount rate, less the cost to acquire those cash flows. In other words, NPV is simply value minus cost. Internal rate of return is a metric. IRR is a metric used in capital budgeting to estimate the profitability of potential investments. The internal rate of return is discount rate that makes the net present value of all cash flows for a particular project equal to zero. IRR calculations rely on the same formula as NPV does. So IRR क्या क्या करती है कि वो IRR rate एक discount rate है, right? Is a metric used in capital budgeting to estimate the profitability of potential investment. The internal rate of return is a discount rate that makes the net present value of all cash flows for a particular project equal to zero. IRR calculations rely on the same formula as NPV does. मतलब बेसिकली ये एक डिस्काउंट रेट है IRR जो एनपीवी सभी इन्वेस्टमेंट के एनपीवी को जीरो बना देती है ना? जीरो मतलब जीरो मान लेती है।
The internal rate of return is the discount rate that makes net present value of a project zero. The internal rate of return IRR is the discount rate that makes the net present value of a project zero. In other words, it is expected compound annual rate of return that will be earned on a project or investment. ठीक है। आईआरआर एक डिस्काउंट रेट है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट के नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो बना देती है। के बाद हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is the estimated return of investment you don't make compared to the expected return of investments you do make. It's an important factor to consider when allocating time or resources to any type of project. Essentially, would my time or money be better spent elsewhere? Opportunity cost is an economics term that refers to the value of what you have to give up in order to choose something else. In a nutshell, it's a value of the road not taken. Opportunity cost क्या होती है कि उन उस पार्टिकुलर हम सपोज मेरे पास दो रास्ते हैं, एक और दो, दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट मेरे पास गिवन 100 रुपए ही है, लेट्स से मैं 100 रुपए प्रोजेक्ट ए पे यूज करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट ए पे, इन दैट केस प्रोजेक्ट बी में प्रोजेक्ट ए से मेरा जितना गेन होगा और प्रोजेक्ट बी में ये अगर मैं इन्वेस्ट करता तो जितना गेन होता मेरा, उन दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। मतलब जितना पैसा मैं खोया जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन द ऑल्टरनेटिव investment plan is called my opportunity cost. How do you calculate cost of capital? The primary meaning of cost of capital is merely the cost of an entity must pay to raise funds. The term can refer, for instance, to the financing cost, interest rate a company pays when securing a loan. ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ब्रॉड टर्म है, बट इसका एक एग्जांपल है कि आप कोई लोन लेते वक्त जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आप उस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट बियर करते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आल्सो इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, राइट। Cost of capital refers to the opportunity cost of making a specific investment. It is the rate of return that could have been earned by putting the same money into a different investment with equal risk. Thus, the cost of capital is the rate of return required to persuade the investor to make a given investment. Okay, so basically that's what it says कि cost of capital है वो कोई इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? Profit and loss statement is a financial statement that summarizes that the revenues, costs, and expenses incurred during a specific period, usually a fiscal quarter or year. Profit and loss statement is synonymous with the income statement. These records provide information about a company's ability to or inability to generate profit by increasing revenue, reducing costs or both. Some refer to the P&L statement as a profit and loss statement, income statement, statement of operations, statement of financial results, earning statement, and expense statement. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है ये जो दिखाता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर किया, और मोर प्रिसाइज कितने पैसे बनाए, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये देखिए, बटरफ्लाई इंडस्ट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस 2021-2020। सेल्स एंड रेवेन्यूज, सेल्स एंड रेवेन्यूज पहला हेड है जिसमें सारे सेल्स वगैरह आ गए। उसके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट की बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। दिस 55184 माइनस 49856। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला, उसके बाद उसके साथ ऐड किया इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अदर इनकम जो कि एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये दोनों
इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने पे हम लोग आते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद वहां से हम लोग प्रोविजन बेनिफिट फॉर इनकम टैक्सेस, प्रॉफिट फॉर कंसोलिडेटेड कंपनीज जो है वो, इक्विटी इन प्रॉफिट लॉस ऑफ अनकंसोलिडेटेड एफिलिएटेड कंपनीज जो है वो हम लोग माइनस कर सब्ट्रैक्ट करते हैं टू अराइव एट प्रॉफिट ऑफ कंसोलिडेटेड एंड एफिलिएटेड कंपनीज। उससे हम लेस करते हैं प्रॉफिट लॉस और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सॉरी। So this is how we calculate a profit and loss statement. Next we come to depreciation. What is depreciation? What are different methods? Which is the best? तो depreciation क्या होता है कि कोई एसेट हम लोग जब परचेस करते हैं तो ईयर ऑन ईयर उसका एक वैल्यू घटता जाता है। तो जो वैल्यू घटता है उसी को हम लोग depreciation कहते हैं। जो रूल depreciation का जो रूल्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू IRS रूल। ओके, IRS rule. Depreciation is the permanent and continuing decrease in the quality, quantity, and value of an asset. The most common depreciation methods are straight line, मतलब जो है एक फिक्स 10% इंटरेस्ट पे, लेट्स से डिप्रिसिएशन रेट 10% है तो 10% से ही हर ईयर मतलब डिप्रिशिएट होगा। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस units of production sum of years digits. Okay, so these are the different methods of using depreciation. Since the objective of depreciation is to match revenues and expenses, it is probably best to choose the method that meets that requirement. Sometimes the machine will be more productive in the early years and less productive in the late years. An accelerated method may be used best in that case. Although matching revenue and expenses is important, accountants are expensive and cost benefit rule comes to play. For that reason, many accountants will use a straight line method to keep things simple, close enough. When doing the accounting for a very small businesses, accountants will often use the exact same depreciation method that was reported on the business's tax return for the company's book. Not an accepted accounting practice, but it does keep things easier for this accountant, saves time and money, and the business owners generally do not care. Still, some accountants, sometimes directed by the management, choose a depreciation method that will make net income and assets look better. That is to help stock prices or obtain a loan. Research has shown that most investors, bankers, and recognize such ploys. So, which method is best? The answer is, as you may have guessed, depends on a lot of factors. Okay, so which depreciation method is best depends on the uh, practicality of the practical conditions of the company, right, in which it is operating. एक कंपनी के लिए जो डेप्रिसिएशन मेथड अच्छा होता है दूसरी कंपनी के लिए वो नहीं भी अच्छा हो सकता है। Then we come to what are capital markets, what all do they include? So capital market मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर स्टॉक्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, राइट। कैपिटल मार्केट के अंदर आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आर वेयर let's say, okay, let's say दिखा कैपिटल मार्केट where securities are bought and sold. It can be classified into primary market and secondary market. Secondary market, okay. Primary market where securities are bought and sold for the first time, and secondary market where securities are bought and second-hand securities are bought and sold.
Capital markets are the markets where securities are, such as share and bonds are issued to raise medium to long-term financing, and where the securities are traded. The securities might be issued by a company which could issue shares or bond to raise money. Bonds could also be issued by other entities in need of long-term cash, such as regional or national governments. The securities are issued in what is known as the primary market and traded in the secondary market. In the primary market, a company would have to face-to-face meetings to place its securities and investors. Company might work with an investment bank that would act as an intermediary and underwrite the offerings. What is difference between NSE and BSE? Which is larger, which is older? What are its levels today? National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange में क्या difference है? Stock exchange is the marketplace where securities can be freely traded between investors with the help of its members, that is brokers. It is great platform for purchasing and selling securities, debts, derivatives. It is a key indicator of financial strength of country's economy. In India, there are two major stock exchanges, Bombay BSE and NSE. Uh, it is the first stock exchange of the continent, Bombay Stock Exchange. कंटिनेंट ओके तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. On the contrary, National Stock Exchange, abbreviated as NSE, is the first stock exchange which is introduced an advanced electronic trading system in the country. To a layman, there is no difference between these two exchanges, but there are slight and subtle points of distinctions amidst the two, which are explained in the article below. Bombay Stock Exchange is the oldest financial market in the country, which offers high-speeding trading to its customers. High-speed trading to its customers. National Stock Exchange is the biggest capital market of the country. The exchange is a front runner in the introduction of the fully automated electronic trading system across the nation. Okay, so this is basically BSc and NSE. तो NSE और BSc बेसिकली मार्केट प्लेस है जहाँ पे स्टॉक्स ब्रॉट और सोल्ड किए जाते हैं, राइट? What is working capital management? What does a treasury do? Working capital management, right? What does a treasury do? Working capital management refers to a company's managerial, accounting, and strategy designed to monitor and utilize the two components of working capital, current asset and current liabilities, to ensure the most financially efficient operation of the company. The primary purpose of working capital management is to make sure the company always maintains sufficient cash flow to meet its short-term operating needs and operating costs and short-term debt obligations. Working capital management is the process of managing the short-term assets and liabilities to so the company has adequate liquidity to operate smoothly. वर्किंग कैपिटल सॉरी वर्किंग कैपिटल के अंडर में दो चीजें आती है. फर्स्ट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली यही है, इन दोनों को मैनेज करना और सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना फॉर मीटिंग द कंपनीज इमरजेंसी या फिर ऑपरेटिंग नीड्स, राइट? वर्किंग कैपिटल का यही मतलब होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को मेंटेन करना और इनफ लिक्विडिटी मेंटेन करना ताकि हम सो दैट द कंपनी कैन meet its day-to-day operational needs. What is the current rupee to dollar rate? Current rupee to dollar rate देख लेते हैं एक बार. 1 rupee equals $0.012 या फिर 80.9 मतलब 81 रुपए. $1 का प्राइस है 81 रुपए, है ना? 81 rupees. What is a mutual fund? How is it different from a fixed deposit or insurance policy? The term mutual fund refers to a pool of money accumulated by several investors who aim at saving and making money through their investment. The corpus of money so created is invested in various asset classes, that is debt, fund, liquid assets, and the like. Just like gains and rewards earned over the period of investment, losers are also shared all the investors in equal proportion in accordance with the proportion of contribution to the corpus. Mutual funds are registered with SEBI that regulates security market prior to the collection of the funds from the investors. Investing in mutual fund can be simply as buying and selling stocks or bonds online. Moreover, investors can sell out their shares whenever they want or need. तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि
बहुत सारे लोग मिलके एक साथ एक कॉर्पस फंड जमा करते हैं जो इन्वेस्ट किया जाता है। सपोज मेरे पास 10 रुपए है, राम के पास 10 रुपए है, मेरे दोस्त के पास 10 रुपए, उसके दोस्त के पास 10 रुपए, उसके पास दोस्त के पास 10 रुपए। सो मेरे 10 रुपए, अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलर 10% रिटर्न देता है, मेरा 10 रुपए सिर्फ 1 रुपए जनरेट करेगा। मेरा उसके बाद सबका एक एक करके एक एक रुपए करके जनरेट करेगा। और एक एक रुपए करके जो जनरेट करेगा, दैट इज अगर मैं पूरा कंबाइंड लूँ तो 10 10 10 10 10, तो 1 2 3 4 5, 5 जो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 50 रुपीज। 50 रुपीज जो है दैट इज पहले ईयर में वो 5 रुपीज इंटरेस्ट जनरेट करेगा, लेकिन दैट इज दैट इज वेयर द कैच कम्स। ये जो 5 है, ये अगर इसके साथ ऐड कर देंगे दैट इज ये 55 बन गया। अब 55 का 10% होता है 5.5, लेकिन अगर हम वन वन का वन 10% ले, तो that will be 1.1, right? So next year the investment amount will be 11.1। और इसमें लेट्स से मेरा शेयर है 10 out of 100, दैट मीन्स 10%, मैं सॉरी 1/5, मतलब 20% मेरा शेयर है। तो 2 साल के बाद मेरा जो इनकम है दैट इज, ओके 50 पे 5 आया, 55 बना, 55 पे 5.5 है, तो 5.5 पे मेरा 20% है, 5.5 इंटू 1/5, दैट इज 1.1 इंटू 1, दैट इज 1.1, 1.1 रुपीज मेरा इंटरेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो है इनकम दैट इज 10 पे 1 रुपए हो गया। तो ओके, सो हियर वी कम टू सी दैट यहाँ पे जो स्कीम है हम लोग मिला के कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सर्टेन एडवांटेज और प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि रिस्क कम हो जाना एंड सो ऑन, राइट? So this is why mutual funds are preferred, and mutual fund is basically a pool of funds from common investors. Okay, a pool of funds generated from common investors. उसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। सो म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारे लोग मिला के करते हैं, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में जो है हम जनरली लोग अकेला फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। म्यूचुअल फंड वर्सेस इंश्योरेंस पॉलिसी। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलके एक साथ एक, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाते हैं। बट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि आप बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, राइट? इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि आप कोई पॉलिसी खरीदते हो और किसी चीज को इंश्योर करवाते हो। इफ दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, देन यू गेट the amount back with interest, and if at the end of maturity, and if that is non-life insurance, then you do not get the what you call, do not get the amount back. But if it is damaged in the during the uh, insured period, then you get the amount of the then you get the insured amount back, है ना? What is inflation? How is it determined? What is CPI? What is WPI? सो इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने बताया था पहले, कि इन्फ्लेशन होता है चीजों का दाम अचानक से बढ़ जाना। इन्फ्लेशन इज द लॉन्ग टर्म राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉज्ड बाय डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस ड्यूरिंग a specified period. It's usually over a month or a year. The percentage tells you how quickly prices rose during the period. For example, if the inflation rate of a gallon of gas is 2% a year, then gas prices will be 2% higher next year. That means gallon that cost 2 this year will be cost 2.04 next year. ओके, सो आई गेस दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब इन्फ्लेशन का एक परसेंटेज होता है, लेट्स से 2%। अगर इन्फ्लेशन प्राइस है तो आज किसी कमोडिटी का करंट प्राइस अगर 100 है तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा 102, राइट? सो दिस इज बेसिकली इन्फ्लेशन। एक जनरली इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, बट सडन अगर मतलब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन जो क्या बोलते हैं उसको, रिसेशन लाता है, ओके, तो वैसे कुछ इन्फ्लेशंस को इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं नहीं माना जाता।
उसके बाद सीपीआई पढ़ते हैं। सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑफन कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, affects you in different ways. Some of them you probably know about, others and you may not. One you are probably familiar with is how the CPI inflation measures inflation, but you may not know that there are many different ways of calculating this index. One 2013 change in the calculation method will adversely affect your social security income. So CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि आप हम वी एज अ कंज्यूमर जो प्राइस पे करते कमोडिटीज के लिए, आप डायरेक्टली वो कैलकुलेट करो कि वो कितना हद तक कितने परसेंट से बढ़ा है ना। अगर हाँ कोई कंज्यूमर 10 रुपए पे कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए इस साल, और नेक्स्ट ईयर वो 15 रुपीज पे कर रहा है सेम कमोडिटी के लिए, तो सीपीआई इन्फ्लेशन है 50%, है ना। On the other hand, WPI is wholesale price index. It is a price index representing the wholesale price of basket of goods. In several countries such as India, it is used to measure inflation, the general rise in the prices of goods. It is released on a weekly basis on every Thursday to measure the change in the wholesale price of a set of goods. As the name suggests, it does not take into account the price at which consumer buy goods, but on wholesale basis. The rationale of having WPI is to know demand and supply condition of goods. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स किस बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करती है, होलसेल प्राइस पे, है ना, होलसेल प्राइस पे। बिकॉज एक पॉइंट पे का इंडिविजुअल शॉपकीपर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, दैट इज अ दैट इज अ वेरिंग कंसेप्ट, राइट। वो अपने मर्जी के मुताबिक, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट क्रॉसेस एमआरपी, ही कैन चार्ज एनीथिंग। बट होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। जनरली एक लेवल पे होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत, क्या बोलूं मैं, बहुत लेस फ्रीक्वेंटली, ओके, चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। और इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स एक बेटर मेजर है इन्फ्लेशन मेजर करने का। The rate at which the price of goods and services increase over a particular period of time, normally year, is not inflation rate. Now the next question is how this inflation rate is calculated in an economy. Although there are various methods to calculate inflation rates, which include CPI and WPI, cost of living index, per producer price index, capital goods price index, and commodity price index, and GDP deflator, but most of the major developed countries use WPI and CPI as the official barometer to weigh their inflation. WPI and CPI are two major indices that decide and set the price of goods in the market. These tools are also keep the track of changing prices. उसके बाद हम आते हैं रेपो और रिवर्स रेपो में। तो रेपो और रिवर्स रेपो मैंने पहले ही बताया था कि रेपो, आरबीआई जिस रेट पे लेंड करती है कमर्शियल बैंक को, दैट इज रेपो। और कमर्शियल बैंक जिस लेंड पे आरबीआई को लेंड करती है, दैट इज रिवर्स रेपो। A repo is the rate at which central bank of a country lends money to commercial bank in the event of a shortfall of funds. Reverse repo is used monetary authorities to control. Sorry, repo rate is used by monetary authorities to control inflation. Repo rate, also known as the benchmark interest, is the rate at which RBI lends money to the banks for short term. When the repo rate increases, borrowing from RBI becomes more expensive. If RBI wants to make it more expensive for the bank to borrow money, it increases the repo rate. Similarly, if it wants to make it cheaper for banks to borrow money, it reduces the repo rate. Current repo rate is 6.25%. देखिए देखिए, सपोज किसी पार्टिकुलर एरिया में बहुत लिक्विडिटी हो गया है, मतलब बहुत बैंक ने कुछ ज्यादा ही पैसे छाप दिए हैं, मतलब पैसे इशू कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है वो बढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा यही है कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस यूजिंग व्हाट यू कॉल a notepad, right? So we want to learn about repo and reverse repo.
तो उसके लिए हमें पहले बेसिक्स जानना पड़ेगा। बेसिक एजम्पशन या फिर बेसिक टेनेट जिस पे इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस होते हैं, दैट इज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, आवर डिमांड्स आर नॉट। ओके, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस फॉर एवरी वन to the extent that everyone's desire is satisfied. Okay, that is why एक finite, let's say 100 units of produce मैन्युफैक्चर होता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का। और नाउ वी कम टू द मनी, राइट। सपोज हमारे पास 10-10 रुपए है। 10-10 रुपए हमारे पास, हम पूरे इकोनॉमी में हम लोग 100 हम लोग 100 लोग, 100 लोग हम लोग है इकोनॉमी में लिव करते हैं, और हमारे पास 10-10 रुपए करके है। नाउ विद 10 let's say I can purchase 1 unit of this manufacture, okay। So और टोटल 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो सब सब लोगों के लिए एक एक यूनिट है। नाउ लेट्स से दिस इज समथिंग which is non given good, right? Let's say this is, let's say, a food, right? Food, important food, like let's say rice. So rice में क्या होता है कि this it is a necessary commodity, so it has to be purchased by households। So क्या होता है यहाँ पे, लेट्स से बैंक ने ज्यादा पैसा छाप दिया, ये है हमारा कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक्स लेट्स से ज्यादा पैसा छाप दिया, और ज्यादा क्रेडिट दे दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो यूनिट था, अभी सबके पास 100 लोगों के पास, सभी के पास लेट्स से डिस्पेयर्ड इनकम है। किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 11 रुपए, किसी के पास 12 रुपए, किसी के पास 13 रुपए। तो विद दिस लेट्स से किसी के पास 20 रुपए है। सो 20 रुपए से वो क्या कर सकता है कि 2 यूनिट खरीद ले सकता है। और जो 2 यूनिट वो जो खरीदेगा, 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता इन मैक्सिमम एफिशिएंसी। और उसके 2 यूनिट्स खरीदने के कारण क्या होगा कि किसी हम में से किसी एक को 1 यूनिट कम मिलेगा, है ना। क्या है, किसी को 1 यूनिट कम मिलेगा। और दैट इज वाई, किसको कम मिलेगा, ये कि कोई नहीं चाहता कि हम लोग आज रात को भूखे सोए। इसलिए व्हाट दे डू, दे विल compete फॉर their 1 unit of product, right? They will compete with prices. It's like a, what you call, barter नहीं, क्या होता है उसको, अम, अरे यार, वो क्या होता है जहाँ पे मतलब एक कमोडिटी के लिए लोग बिडिंग करते हैं। मैं टर्म भूल रहा हूँ, बट आई यू गेट द आइडिया, राइट। They compete for the 1 unit of good, right? So uh, this is what happens when bank has issued more liquidity. Now इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, it uses, now this is called okay, so as you can see 100 यूनिट्स ही हमारे पास है, और सब लोग अलग अलग प्राइसेस, competitive प्राइसेस बिड करने के लिए तैयार है। तो यूनिट उसी को जाएगा जो सबसे ज्यादा प्राइस देगी, है ना। और इसी के कारण जो है प्राइस हमारा एक यूनिट का 10 से लेके 20 हो जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू क्योर दिस, अब 20 रुपए होने से क्या होगा, जिसके पास लेट्स से इस इनकम डिस्पैरिटी में जिसके पास कम सबसे लोएस्ट अमाउंट है, लेट्स से ये हमारा ये लेट्स से राम है हमारा। राम बेचारा कोई स्कीम चल रहा था इकोनॉमी में, जिसके वजह से लोगों को इजी क्रेडिट मिल रहा था, वो बेचारा अवेल नहीं कर पाया। तो उसके लिए 10 रुपए का वैल्यू 10 रुपए ही रहेगा, है ना। एंड ही विल बी एट डिसएडवांटेजियस पोजिशन। सो लेट्स से आरबीआई क्या करती है इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ही कैन यूज आरबीआई कैन यूज 2 मेजर्स। फर्स्ट इज मॉनिटरी
सेकेंड इज फिस्कल। मॉनिटरी मेथड और फिस्कल मेथड, इसको कहते हैं मॉनिटरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मॉनिटरी इन्फ्लेशन के तहत वो क्या कर सकती है, सबसे मेजर जो स्टेप है, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑल्टर, है ना, इसकी मदद से। और इंटरेस्ट रेट ऑल्टर के अंडर में ही आता है रेपो, रिवर्स रेपो। रेपो में क्या होता है कि सॉरी, पहले तो मॉनिटरी मेथड में आते हैं। मॉनिटरी मेथड क्या होता है कि सरकार, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कर्व करने की कोशिश करती है, पैसे को, लिक्विडिटी को, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको सक इन करके, है ना। और वो कैसे करती है, इंटरेस्ट को बढ़ा के या घटा के। और इंटरेस्ट के अंदर में आता है रेपो। ओके, सो रेपो क्या होता है कि आरबीआई आरबीआई बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, जिसकी मदद से कमर्शियल बैंक्स भी इजीली लोन दे सकता है पब्लिक को। अगर आरबीआई कम मतलब इंटरेस्ट में लोन छोड़ देती है, तो इन दैट केस कमर्शियल बैंक्स भी कम इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है पब्लिक से। लेकिन अगर आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से, देन कमर्शियल बैंक हैव्स टू चार्ज मोर फ्रॉम द पब्लिक एज वेल। ओके, सो इन दिस वे जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता है ना, कोई उधार नहीं लेना चाहता है बैंक से। सो इन दैट केस जो है, लोग कम क्रेडिट लेते हैं बैंक से, और ज्यादा से ज्यादा पैसा रखते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास। ओके, सो दिस इज हाउ इंटर रेपो रेट वर्क्स। रिवर्स रेपो इसका बिल्कुल अपोजिट है। जब आरबीआई आरबीआई देखती है, जब आरबीआई मतलब रेपो रेट होता है आरबीआई देती है, रिवर्स रेपो होता है आरबीआई लेती है ना। आरबीआई रेपो रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट देती है, और रिवर्स रेपो में आरबीआई इंटरेस्ट लेती है। मतलब इंसेंटिवाइज करती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप पब्लिक को इंटरेस्ट देने की वजह मेरे पास जो है पैसे रखो अपना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, दैट विल बी कंपैरेटिवली या competitively बेटर देन व्हाट public has to offer to you, right? So this is how they control the inflation in according to monetary method. अगर हम आते हैं फिजिकल मेथड्स पे, तो फिजिकल मेथड्स में includes all those measures apart from control directly controlling money in the economy or directly impacting liquidity. फिजिकल का सबसे अच्छा एग्जांपल है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स, अगर सरकार चाहती है कि लोगों के पास कम पैसा हो, या आई मीन स्पेंड करने के लिए कम पैसा हो, then he will just increase the amount of tax, right? Increase the amount of tax that a business have to pay in order to curb the inflation. So we just studied in depth about the repo, reverse repo, and how basically government controls inflation, right? उसके बाद हम आते हैं सीआरआर पे। सीआरआर वो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक का डिपॉजिट है और आरबीआई के पास मैंडेटरीली रखना पड़ता है। ओके, CRR is the amount of funds that banks have to maintain with RBI at all times. The central bank decide to increase the CRR, the amount available with the banks for dispersal comes down. Okay, so CRR is also a measure by which uh, क्या बोलते हैं, RBI can control inflation. Okay, CRR is a part of monetary policy to curb inflation. एक और वो होता है, कंसेप्ट होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी मैंने पढ़ाया था कुछ इसके पहले वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में। वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि एक पूरे कमर्शियल बैंक का एक, क्या बोलते हैं उसको, एक परसेंटेज, सपोज 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं कमर्शियल बैंक, तो वहां से लेट से 10% जो है वो मैंडेटरीली वो रिजर्व बैंक के पास रख देगा
सॉरी, अपने पास, नॉट रिजर्व बैंक के पास, एसएलआर अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक, है ना। हम्म, और इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड्स, राइट। एसएलआर गोल्ड, मेनली गोल्ड होता है, तो एसएलआर वो परसेंटेज होता है टोटल ऑपरेशनल एसेट का, वैल्यू का। सपोज 100 रुपीज का डील कर रहा है, तो 10 रुपए वो मैंडेटरीली अपने पास रख देगा कमर्शियल बैंक एज अ गोल्ड, राइट। सो दिस वाज बेसिकली ऑल एवरीथिंग दैट हैज टू डू विथ finance basics. I will teach more about finance in the book that I am planning to cover, which is How Finance Works by Mihir A. Desai. In that particular book, we will get to know about comprehensive knowledge regarding the finance topic. Okay, so let's keep the video till here only. If you find this video helpful, then please like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.